अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है। मेरे साथ आज सादिया हैं, शाहरुख हैं, इमरान हैं। अ, मैं पिछले बचपन से एक्चुअली 8 14 साल की उम्र से लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ और मैं जब अक्सर पूछता हूँ कि आपको मेरी कौन-सी बात समझ में आती है या समझ आता है कि मैं क्या करता हूँ, तो ये समझते हैं कि एक्चुअली मैं नोकिया का काम करता हूँ, कनेक्टिंग पीपल का ही काम करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं लोगों को जोड़ने का ही काम करता हूँ। तो हाल ही में मैं यूरोप में हूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत ट्रैवल किया, तो मुझे यही प्रॉब्लम नज़र आया है अभी भी। आज भी मैंने पूछा कि आपके लीडर कौन हैं? तो सारे के सारों के लीडर पाकिस्तानी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनसे वो सीख रहे हैं, जिनको वो लीडर जानते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो क्योंकि वो अपने आप को एक डब्बे में रखे हुए हैं, डब्बे से बाहर ही नहीं निकलने को तैयार हैं, तो वो ना अपनी आमदनी बढ़ा पा रहे हैं, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, ना सोच इवॉल्व कर पा रहे हैं। और यही चीज़ दूसरे ममालिक के लोगों में भी मुझे नज़र आई कि वो भी पाकिस्तान से इतना डरते हैं, नाम सुन के डर जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान तो कोई बहुत ही गरीब मुल्क है, बहुत ही अ, डेंजरस मुल्क है और जाना का नाम से भी डर जाते हैं और बहुत दूर समझते हैं। ये पाकिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा कहीं दूर जगह है। अमेरिका से यूरोप आए हुए लोग कहते हैं पाकिस्तान, ओह! इतने दूर से आए हो तुम? मैंने कहा आप अमेरिका से आए, वहाँ आने में 24 घंटे लगते हैं, मुझे तो 4 घंटे का ट्रिप लगता है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए फिर सादिया जो हैं माशाल्लाह इंटरव्यू स्कूल को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे ख़्याल आया कि लोगों को अभी तक मकसद नहीं समझ में आया कि इंटरव्यू करने का मकसद क्या होता है और मकसद उससे फ़ायदा क्या होगा? तो मुझे एक टर्मिनोलॉजी आज मिली है, उसका नाम है चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर। मेरा ख़्याल था पहले कॉइन नहीं है, लेकिन मैंने चैटजीपीटी से पूछा, तो उसने मुझे निकाल के खुद ही बना के दे दी कि ये होता है चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर। तो हम जब कनेक्शन बनाते हैं, एक-दूसरे के साथ इंटरव्यू करते हैं, तो एक कनेक्शन, एक रिश्ता बन जाता है दोस्ती का, एक्quaintance का। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सादिया की जो ट्रेनिंग है, उसको थोड़ा-सा फ़ोकस कराया जाए और चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर का एक रोल क्रिएट किया जाए दुनिया में। और ये कनेक्शन ऑफ़िसर कंपनीज़ के लिए कनेक्शंस बनाएगा, इदारों के लिए कनेक्शन बनाएगा और जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ शम्स हैं, तो शम्स की ख़्वाहिश होती है कि लोग हर वक़्त उनके इलाके को विज़िट करें। तो अब इलाके को जब विज़िट करने की बात आती है, तो उनसे एक रिश्ता बनाना ज़रूरी है, कनेक्शन बनाना ज़रूरी है और उस कनेक्शन को बनाने के नतीजे में लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट पैदा हो जाता है, भरोसा पैदा हो जाता है। तो उसी के ऊपर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह होता है और कैसे काम करेगा। तो चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर क्योंकि अभी तक एक टर्म ही नहीं है, किसी को पता नहीं है ये क्या होता है, तो शुरू में तो लोग झुँझलाएँगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको एज़ अ सर्विस अपने स्टूडेंट्स को सिखाएँ कि आप एज़ अ चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानी जिनकी उर्दू अच्छी है, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो वो चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर बतौर स्वीडन, नॉर्वे जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे तो कनेक्ट कर ही सकता है। जैसे इमरान लीडरशिप वाले भाई हैं, वो घबरा जाते हैं अभी भी अंग्रेज़ों से। तो वो क्या करें कि जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, वो पैसे ज़्यादा बनाते हैं। उनके साथ कनेक्शंस बनाना शुरू करें, उसमें लोग ढूँढना शुरू करें और उनसे कनेक्शन बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान जो है ट्रेनिंग देते हैं लीडरशिप की बच्चों को, बड़ों को कि आप मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट हैं। तो बतौर मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट उनको जो इंटरव्यूज़ कराने हैं, वो ऐसे लोगों से कराने हैं जो क्लाइमेट चेंज में, फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। दूसरा मिनिस्टर है दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल केईएससी के अंदर ये चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर लग जाते हैं। तो अब केईएससी को किस में इंटरेस्ट होगा? केईएससी को इंटरेस्ट ये होगा कि दुनिया में और इलेक्ट्रिक की जो कंपनीज़ हैं उनसे कनेक्शन बनाया जाए। तो इमरान जाएँगे गूगल पे, चैटजीपीटी पे ढूँढेंगे उन लोगों को
जो इलेक्ट्रिक की कंपनीज में काम करते हैं, उनको लिंक्डइन पे अप्रोच करेंगे, उनको पास उसको उनसे गुफ्तगू करेंगे वन ऑन वन, और उनसे कहेंगे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और उसके लिए पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपका पॉडकास्ट कर सकता हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ। ये हमारे पुराने पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। तो ये है वो रोल जो मेरे समझ में आया है इसको करने के लिए। उससे होगा क्या? उससे रास्ता बन जाएगा, उस कंपनी का आपस में एक रिश्ता बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा कम्युनिकेट करने में। फिर इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है या किसी नए मुल्क में जाना है, तो मैं अपने चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर को बोल सकता हूँ कि बेटा मेरे लिए ज़रा, मैं यूके जा रहा हूँ, वहाँ पर 50 लोगों को निकाल दो। तो उन 50 लोगों को वो ढूँढेगा, उनसे कनेक्शन बनाएगा, उनसे दोस्ती करेगा, उनसे अपॉइंटमेंट लेके देगा, उनको बताएगा मेरे बारे में, हमारे काम के बारे में, और उनका कुछ का इंटरव्यू भी कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि मैं उन इंटरव्यू को देख के जब उनसे मुलाकात करूँगा, तो मुझे मेरा टाइम बच जाएगा और मैं उनसे डायरेक्ट काम की बात करूँगा, बजाय इसके कि पहले मैं उनकी कहानी सुनूँ कि वो कौन है, क्या करते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि मैं किसी से मिलता हूँ तो पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका बैकग्राउंड क्या है, जाके मैं उनसे रिश्ता जोड़ सकूँ बेहतर अंदाज़ से। तो ये एक छोटा-सा रोल है। आप में से किसी के ज़हन में अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए? अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, ये जो ट्रेनिंग होगी, ये इसी तरह की जो आप बता रहे हैं, ये इसी ट्रेनिंग में शामिल होगा। एक इंटरव्यूअर जो बहुत कर सकता है, जिसके कनेक्शंस उसको आते हैं बिल्ड करना, तो वो ये सारा काम कर सकता है। जी हाँ। किसी को कोई समझ अगर सवाल नहीं है तो अब आप शाहरुख मुझे समझाइए कि क्या समझ में आया अभी तक? जी, रेहान भाई। मुझे बेसिकली ये समझ में आया है कि चीफ कनेक्शन कनेक्शन ऑफिसर जो है वो अब एक टर्म आई है, लेकिन ये पहले से लोग हो रहे हैं कि जैसे आप हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई टर्म नहीं है, या आपको लोग कनेक्टर तो कहते हैं लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं थी। अब एक जॉब क्रिएट हो गई है मार्केट में जो कि अभी आई है, और उसमें ये होगा कि कंपनीज जो है वो चीफ कनेक्शन ऑफिसर हायर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, तो टेलीकॉम की इंडस्ट्री में अगर किसी को क्लाइंट चाहिए या कोई और मर्जर्स के लिए, एक्विजिशंस के लिए लोग चाहिए, तो चीफ कनेक्शन ऑफिसर का रोल ये होगा कि वो लोग ढूंढेगा, उनको सेग्रीगेट करेगा, उसमें से काम के लोग निकालेगा और प्योर कनेक्शन जो है वो अपने ओनर्स को या डायरेक्टर्स को दे सकता है। इसी तरह ट्रैवल में आपने बताया कि अगर कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है तो उसको प्रॉपर प्रॉपर एजेंडा के साथ कनेक्शंस मिल जाएंगे। हर फील्ड के अंदर ज़रूरत है, और हैं भी लोग। एक्चुअली अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ था, तो अब चीफ कनेक्शन ऑफिसर जो है वो स्पेसिफिक नाम आ गया है जो कि ऑफिशियली ये काम करेगा। दैट व्हाट आई लर्न। सही है। इमरान आप भी समरी बयान कर दीजिए। जी, बिल्कुल सर। सर मैं इस बात को कुछ इस तरह से समझा हूँ, जैसे कि आपने बयान किया, एज़ अ चीफ कनेक्शन ऑफिसर जिस तरीके से एचआर डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज, कुछ एचआर के लोग जो हैं अपनी कुछ इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन वो होती है इनसाइड, तो उसके बारे में किसी को इतना पता नहीं होता, सिर्फ एक कंपनी का नाम होता है, लेकिन वो इस तरीके से अपने कनेक्शंस के थ्रू मुख्तलिफ एतबार से लोगों को मुख्तलिफ ज़ावियों से तराश कर, निकाल कर, ढूंढ कर, बातचीत करके आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। तो मुझे ये बात कुछ इस तरह से इस वे में समझ आई है कि अगरचे मिसाल के तौर पर हमें इस एतबार से फ़ोक़ियत हासिल है, लोगों को जांचने का पैमाना हासिल है, उनको साथ-साथ उनकी सलाहियतों के मुताबिक अगर एक शख्स के अंदर एक टैलेंट मौजूद है, तो उसको उसकी शनाख्त करवाने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको आगे कनेक्ट करवाकर उसको मज़ीद कनेक्शन उसके बिल्ड कर सकें और वो इसका फिर फ़ायदा हासिल कर सके। वो जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, वो बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ और सेक्टर्स के एतबार से भी हो सकता है।
तो ये बताइए कि अगर अगर अम, कोई चीफ कनेक्शन ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा उस बंदे को एम्प्लॉय करने में, और उस एम्प्लॉय को क्या क्या काम करने होंगे? शाहरुख, आप पहले बताइए। पहला तो उसका काम ये होगा टू फाइंड द करेक्ट पर्सन फॉर द कंपनी फेवर। ऐसा वो कनेक्शन अपने निकाल के वो बंदे ढूंढे जो कंपनी के लिए फेवरेबल हों या काम आ सके। सेकंड, उसका काम ये होगा कि वो आगे लीड जनरेट करेगा, बिजनेस बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को सर्च कर सकता है जो कि बिजनेस बढ़ाने में कंपनी की मदद कर सकें। तीसरी चीज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट कि वो जो है खुद एक सुपर कनेक्टर बन जाएगा और इस तरह की अपनी एक कम्युनिटी भी बना लेंगे ऐसे लोग जो कि प्रॉपर अपनी एक वो इवनिंग होगी और उसके उन्हीं से लोग हायर होंगे जो आगे फर्दर कंपनीज में काम करेंगे। तो तीन चीजें मुझे समझ में आई इससे कि हो सकती है। सही है। लीड जनरेशन को हम सेकंड ही रखेंगे, और लीड जनरेशन क्योंकि सेल्स के लोग करते ही हैं, मार्केटिंग के लोग करते ही हैं, तो ये जो है ना, बेसिकली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लेज़ॉन या कनेक्शंस बिल्डिंग का काम करेगा। तो जैसे हम इंसान पार्टी में करते हैं कि भी अगर आप उस उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो आपका हम इंटरव्यू करते हैं, जाके आपके साथ दोस्ती हो जाए, जाके वो काम कर सकें। एक्चुअली मेजॉरिटी पीपल इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये कोई करता नहीं है अभी तक, और ये पॉसिबल भी नहीं था इस तरह से करना, क्योंकि इंटरनेट ऐसा नहीं था, फास्ट इंटरनेट नहीं होता था, टेक्नोलॉजीज़ ऐसी नहीं होती थी, ज़ूम नहीं होता था। तो इस इंसान का काम इंटरव्यू करना होगा, पॉडकास्ट क्रिएट करना होगा, एक कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, हम उससे एक कनेक्शन बना रहे हैं, उससे एक मीटिंग कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, और वो हेलो हाय थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली क्या होता है बिज़नेसेस के अंदर कि जब आप कनेक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने आज मैं नेक्स्ट वीक ओस्लो में हूँगा दोबारा, तो मैंने एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी एक ऐसे नेटवर्क, ऐसे बंदी के साथ जो मैं उसके साथ 6 साल से मुझे जानती है वो। लेकिन उसने कंफर्टेबल नहीं फ़ील किया अपना व्हाट्सएप नंबर देना स्टिल। मैंने कहा मैसेंजर पे ही मैसेज कर देना। लेकिन अगर वो मेरे साथ आधे घंटे की पॉडकास्ट करी होती उसने, तो वो नंबर मुझे दे देती। तो जब मैं मुलाकात करूँगा, तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो मुलाकात फ़ालतू होगी या काम की होगी बगैर जाए, क्योंकि अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओस्लो में जाऊँगा, खाना खाऊँगा, तो मेरे और वो उसको खाना खिलाऊँगा, तो मेरे 12,000 रुपए ख़त्म हो गए। प्लस मेरा टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि मेरा जितने घंटे मैं रहूँगा, उतने घंटे का मुझे होटल चाहिए, मैं एक ख़ास नए स्पेस में जा रहा हूँ ना। तो इंटरनेट के ऊपर अगर मैं पहले से दोस्ती करके रखूँ और पहले से ज़ूम कॉल 2-3 दफ़ा कर लूँ और वो पब्लिक भी कर दूँ, और वो उसकी वजह से वो इंसान मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट करना क्रिएट हो जाए, तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो वो मुझे खाने पे लेके जाएगा या जाएगी, और वो या मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि शाहरुख साहब हैं, वो ओस्लो आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें, या लंदन आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें, वो मेरे साथ काम करते हैं। तो वो ट्रस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी है जो कि आज तक मैंने नहीं देखी किसी को करते हुए। अननोइंगली लोग करते होंगे, लेकिन हम इंटेंशनली इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जाके लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी बंदा रखने की, और ये इंटरनेट पे बैठ के की जा सकती है। कोई भी कहीं से भी बैठ के कर सकता है, और रिमोट जॉब है। इसके लिए ये जॉब क्रिएट की जा रही है। हमने पहले भी इस तरह की जॉबें क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर टॉक ट्यूब था, और टॉक ट्यूब भी इसीलिए बनाया गया था कि लोग इंटरव्यूज़ दें और एक-दूसरे से मुलाकातें करें और बातें करें। लेकिन वो कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हो सका, लोगों की नहीं समझ में आया। तो असल जो प्रॉब्लम होता है वो टेक्निकल नहीं होता है, वो लोगों को बात समझ में आना ज़रूरी है कि ये मैं क्यों करूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर बनूँगा तो ये फ़ायदा होगा, इंजीनियर बनूँगा तो ये फ़ायदा होगा। ये चीफ़ कनेक्शन ऑफ़िसर क्या भला होती है, और मैं इसको क्यों करूँ? और मैं जैसे कोई फ्रीलांसर नहीं बनना चाहता, इसीलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि कोई कोई बना नहीं है। तो ज़्यादातर लोग वो काम करते हैं
जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। वो ये इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो इसलिए कर रहे होते हैं कि दूसरे करते हैं। और ये पाकिस्तानी फिनोमेना नहीं है, ये दुनिया का फिनोमेना है। हर इंसान इसी तरह से काम करता है। कुछ पागल लोग होते हैं, 1-2% जो नई चीज़ें कर लेते हैं। 90% लोग नई चीज़ें नहीं करते, 70% बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम क्योंकि नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो इसके अंदर मेहनत ज़्यादा करनी होगी, रिज़ल्ट कम आएगा। यानी पथरीला ज़मीन है, उस पथरीली ज़मीन को खोदना भी पड़ेगा, मट्टी भी चेंज करनी पड़ेगी, खाद भी डालनी पड़ेगी और फिर पूँ करके एक छोटा-सा पौधा निकलेगा और वो हो सकता है मर जाए। अ, अब आप समझाइए सादिया कि क्या समझ में आया, ये चीफ कनेक्शन ऑफिसर क्या होता है? सर मैंने यही समझा कि वो अपने कनेक्शंस जो है वो अपने कनेक्शंस के ज़रिए अपनी जिस भी कंपनी में जाएगा उसको फ़ायदा देगा और इस तरह फ़ायदा देगा कि इंटरव्यूज़ करेंगे और ये क्योंकि नई न्यू टर्म है वैसे लोगों को समझ में मुश्किल से आएगी लेकिन पहले एचआर जैसे इन्होंने कहा था एचआर के बाद बारे में बात होती थी लोग उसी को ज़्यादा समझते थे कि ये कोई एचआर ऑफिसर है और यही ज़्यादा अच्छी पब्लिक डीलिंग कर सकता है लेकिन पब्लिक डील करने को ना कस्टमर सर्विस और ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन जो न्यू आपने टर्म निकाली है ये बड़ी अच्छी है और इससे हम ऑनलाइन अगर हम अपने कॉन्टैक्ट बिल्डअप कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसा है ये आइडिया इस तरह काम करेगा और काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा कंपनीज़ को या जिसको भी और उस पर्सन को ज़्यादा होगा जो कर रहा होगा ये जो ये बनेगा इस तरह। उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐड होंगी, जैसे कि मेरे अंदर हुई हैं। ठीक है। तो इस पोजीशन के लिए मैंने एक फ्रीलांसिंग की जॉब भी निकाली है। उसकी मैंने पोस्ट भी निकाल के लगा दी है कि एज़ अ फ्रीलांसर भी आप ये पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी छोटी है, तो मैं एचआर मैनेजर नहीं हायर कर सकता हूँ क्योंकि एचआर मैनेजर जो है वो लाख 2 लाख रुपए का आता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक कंसल्टेंट या एचआर कंपनी हायर कर लूँगा, जो ये काम कर देगी। अगर मुझे घर बनाना है, तो मैं ठेकेदार की जगह किसी मज़दूर की जगह किसी ठेकेदार को भी हायर कर सकता हूँ, जो कि थोड़े से पैसे ज़्यादा लेगा, लेकिन वो 5 काम कर रहा होगा एक जगह से, एक ही आदमी के लिए नहीं काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से उस आदमी की आमदनी भी बढ़ जाएगी और जो लोग अच्छे हैं कनेक्शन के अंदर, जो हमने इतने सालों में बनाए हैं, वो ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकेंगे इस तरीके से। और वो थर्ड पार्टी के लिए एज़ अ कनेक्शन ऑफिसर एक ही आदमी 5 लोगों के लिए काम कर सकेगा। उसका नेटवर्क खोल सके लेके काम कर सकेगा। तो इसका मैंने अपवर्क, लिंक्डइन, फाइवर का गिग बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये किस तरीके से आप गिग बना के अपने आप को ऑफ़र कर सकते हैं कि जी, अगर किसी को समझ में आ जाए ये क्या होता है, तो और वो लेना चाह रहा हो, तो उससे फ़ायदा उठा सकता है। अम, अच्छा जी, अब हम आते हैं कि अम, ढूँढे कैसे जाते हैं, कनेक्शन कैसे ढूँढे जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सादिया, आपने अब 100 इंटरव्यूज़ किए हैं और आपने ट्रस्ट की वजह से किए हैं। आपको मुझ पे ट्रस्ट था, इसलिए आपने शुरू में करने शुरू किए और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हुआ कि ये हो क्या रहा है। शुरू में जो है वो ट्रस्ट की वजह से लोग आते हैं और फिर बाद में समझ की वजह से आते हैं। तो इस वक़्त जो भी आपके पास आता है वो या तो क्यूरियस होता है, तो आ जाता है, या वो उसके अंदर तजस्सुस होता है और या फिर वो ट्रस्ट के साथ लेकर आ रहा होता है। तो हम ये 2 चीज़ों को कैश करते हैं कि जी या तो आप क्यूरियस हैं या तजस्सुस है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और दूसरा ये कि वो उनको भरोसा होता है कि नहीं ये हमारा टीचर है जो बता रहा है, सही बता रहा होगा। तो पहले 50-100 इंटरव्यू में ना समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और उसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है। तो जो आप कोर्स बनाएँगी, वो पहले आप इंटरव्यूअर का ही कोर्स आप उनको कहेंगी कि पहले आप इंटरव्यू का कोर्स करें, फिर 50 इंटरव्यू आप कर लें और उसके बाद जब आप ये समझ जाएँ, तो फिर मैं आपको ये भी सिखा सकती हूँ कि आप एक चीफ कनेक्शन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और फाइवर, लिंक्डइन के ऊपर और अपवर्क पे जाके ये लोगों को सर्विसेज़ कैसे ऑफ़र कर सकते हैं। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि अब आपको सर्विसेज़ ऑफ़र करनी है।
तो पहले मैं आपको आपके लिए बताता हूँ कि आप अब अगले स्टेज पे कैसे जाएँगी। यानी आप अभी तक रैंडम इंटरव्यूज़ करती हैं। एक तो आपका ऑब्स्टिकल नंबर 1 है कि आप अंग्रेज़ी में इंटरव्यू नहीं करती। तो उस अंग्रेज़ी में इंटरव्यू ना करने की वजह से आप उस मार्केट में हैं जो सस्ती मार्केट है। हमारे यहाँ बिरयानी $1 की है, यूरोप में बिरयानी $15 की है। तो आप अपने आप को 15 गुना सस्ता बेच रही हैं या ऑफ़र कर रही हैं सर्विसेज़, क्योंकि आपकी मार्केट सिर्फ़ फ़र्क है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में काजू है। जब काजू है ₹3000 किलो होता है कराची में शायद तकरीबन, या ₹4000 हो गया होगा। और यही एग्ज़ैक्ट काजू केनिया से चलता है ₹50 किलो। तो ₹50 किलो चीज़ यहाँ पहुँचते-पहुँचते ₹4000 किलो हो जाती है। बिल्कुल ही इसी तरीक़े से आप अपनी सर्विसेज़ को जब डिफ़रेंट मार्केट में ऑफ़र करते हैं, तो आपकी प्राइस चेंज हो जाती है। यही है टोटल मेरा इंटरेस्ट कि ये हम अपने आप को सस्ता बेच रहे हैं। इसलिए सस्ता बेच रहे हैं कि हमारे कनेक्शन नहीं है उस जगहों पर, जहाँ पर हम अपने आप को महँगा बेच सकें। हम वहाँ किसी को जानते नहीं हैं, हमारा भरोसा नहीं है कि हम कैसे ये सब काम कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है, और वो भरोसा पहले हमें अपने ऊपर आना पड़ता है, फिर उसके बाद हम दूसरा हम पे भरोसा करेगा। हमें खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम दूसरे पे कैसे भरोसा करेंगे? इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक और है कि इमरान जब इस्लामाबाद पहली दफ़ा जा रहे थे, तो इनको उल्टियाँ आना शुरू हो गई थी, और बाकायदा फ़िज़िकली ये बीमार हो गए थे कि जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ, पहली दफ़ा सिंध से निकल के जा रहा हूँ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये मेंटल बैरियर होता है हमारा, जो हमें बीमार कर देता है, फ़िज़िकली बीमार कर देता है। कुछ लोग जो हैं वो गायकों की तरह होते हैं, जैसे शाहरुख है, कि भई वो चला गया, वो फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी चला गया एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जमूत का शिकार होते हैं, और वो तब्दीली नहीं ला सकते अपने अंदर। अम, तो कोई सवाल आया किसी के पास? हाथ उठा दें सवाल आया तो। जी, शाहरुख बेटा। रेहानवी, मेरा सवाल ये है कि ये जो चीफ कनेक्शन ऑफिसर होगा, इट हैज़ टू बी अ आउटगोइंग पर्सन, या सिर्फ ये ऑनलाइन पॉडकास्ट करेगा, कनेक्शन लोकली जनरेट करेगा, या फिजिकल भी साथ साथ करेगा? मेरे ख़्याल में तो बंदे की और सिटी की लोकेशन पे डिपेंड करता है। मेरे ख़्याल में तो मैं जो क्रिएट करना चाहता हूँ, वो तो वर्चुअल ख़वातीन के लिए पोज़ीशन करना चाहता हूँ क्रिएट, कि ये वर्चुअली लोग ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, वो आराम से ये काम कर सकती हैं। लोग आराम से कनेक्ट हो जाते हैं ख़ातून से, क्योंकि औरत जल्दी ट्रस्ट गेन कर लेती है। मर्द को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रस्ट गेन करने के लिए। दुनिया में बिज़नेस के वर्ल्ड में औरतें कम हैं, और इस वजह से भी सेकंड रीज़न ये है कि वो आराम से कनेक्शन कर सकती हैं। तो मेरा टारगेट तो यही है कि ये ख़वातीन ज़्यादा इसमें एंट्री लें, और लेकिन कोई भी लेना चाहे तो ले ले। तो फिज़िकल भी हो सकता है, फिज़िकल तो अभी भी करते हैं ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बहुत सारे इदारे इसी काम के लिए तो बने हुए हैं कि लोग एक-दूसरे को कनेक्ट करें। पार्टीज़ में जाते हैं, फिज़िकल जगहों पे जाते हैं, वहाँ बड़े आराम से कनेक्शन हो जाता है, लोग अपना नंबर फ़ौरन दे देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनेट पे ये काम करना चाह रहे हैं, इसके अंदर टेक्निक्स फ़र्क हैं, और ट्रस्ट देर से आता है लोगों को, क्योंकि उनको आदत नहीं है ज़ूम के ऊपर, स्ट्रीमयार्ड के ऊपर, व्हाट्सऐप के ऊपर दोस्तियाँ बनाने का, ट्रस्ट क्रिएट करने का। लोग फ़ौरन डर जाते हैं टेक्नोलॉजी से कि मेरा अकाउंट ना हैक हो जाए, ये कौन पैदा हो गया एकदम से। अगर कल आपको बेलारूस से मैसेजेस आ जाएँ, घाना से मैसेज आ जाए, रवांडा से मैसेज आ जाए, मेरे साथ कनेक्शन बना लो, तो आप परेशान हो जाएँगे, आज तक कभी नहीं आया, ये कौन पैदा हो गया एकदम से। तो एकदम से जब भी कोई चीज़ होती है, लोग शॉक में आ जाते हैं, डर जाते हैं, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना हो। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ़ोटो लगा के कोई मैसेज कर रहा होगा अमेरिका से, जी मेरे साथ इंटरव्यू कर लें, 99% चांसेस हैं कि फ्रॉडिया होगा, क्योंकि वो कभी कोई करती नहीं है। तो इसलिए ध्यान लोग ट्रस्ट नहीं करते इस पे। तो यहाँ पे यही उस ट्रस्ट डेफ़िसिट ही को बढ़ाने के लिए ये काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो ट्रस्ट डेफ़िसिट ही की वजह से हमारे मसाइल हैं ममालिक के दरमियान में। अगर
रूस और यूक्रेन के दरमियान में गवर्नमेंट की बहुत दोस्ती हो, तो हम हमला कहाँ से करेगा? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत दोस्ती हो, पब्लिकली दोस्ती हो, तो हम लड़ाई कहाँ से करेंगे? लड़ाई तो आप उससे करते हैं ना, जिससे आप बात नहीं करते, उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होती, इसीलिए तो पंच मार देते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा इतना आ जाता है, आप समझ ही नहीं रहा बात को। यार कमाल है यार, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। इसी बात पे तो गुस्सा आता है कि बात नहीं समझ में आ रही। सो बात तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि हम वर्चुअली क्रिएट करें, और वर्चुअली क्रिएट करने के लिए लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट टूल टू एंट्री एंट्री मारने के लिए। और उसके बाद फिर उसी के ऊपर ये पॉडकास्ट से जब आप टाइम लेके पॉडकास्ट कर देते हैं, इंटरव्यू कर देते हैं। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो वो फैशन में है, इंटरव्यू करते हैं तो वो नॉट फैशन में। नाम फ़र्क है, हालाँकि दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम का फ़र्क है। आप क्या वो आप इंटरव्यू कर रहे हैं या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं? अगर कोई टीवी चैनल पे बुलाएगा तो वो इंटरव्यू कहला जाएगा, अगर वो इंटरनेट पे है तो वो पॉडकास्ट कहला रही है, बस ये फ़र्क है। तो अब हमने इसकी जो नाम है पॉडकास्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है, हम पॉडकास्ट के नाम पे शुरू करा देते हैं। तो अब सादिया, आपको क्या करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तलाश करने चाहिए लिंक्डइन पे और फेसबुक पे जो पॉडकास्ट करते हैं, एग्ज़िस्टिंग पॉडकास्ट करते हैं, और आपको अपनी पॉडकास्ट शुरू करनी चाहिए कि जी जो भी आपने नाम रखा है, लेकिन वो अंग्रेज़ी में आप करें। और आप उसको उससे पहले आप उर्दू में जो लोग पॉडकास्ट अभी करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा 100% कि मैं ठीक हूँ। हम आपको जितना भी बोलें आप अच्छी हैं, आप ठीक हैं, आपको नहीं भरोसा आएगा। आपको अपने आप को ही सैटिस्फाई करना है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और थर्ड पार्टी जब आपको बोलेगी कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप कहेंगे नहीं ये मस्कानी लगा रहा है, इसका कोई मेरे से काम नहीं है। और कोई जानने वाला आपको कहेगा नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं ये तो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक अजीब-ओ-गरीब तरीके से दिमाग काम करता है। उसको समझें और कोई कोशिश करें और उस पे अमल करें। तो आप पहले लोकल पॉडकास्ट करें, लोकल पॉडकास्टर्स के साथ, जो भी हैं उनको अप्रोच करें, लिंक्डइन पे जाएँ, सिंपली सर्च में लिख दें पॉडकास्ट। तो आपके साथ जैसे हम यहाँ पे पॉडकास्ट लिखते हैं, तो ये सारे आ गया, शॉर्ट सेलर एंड पॉडकास्ट होस्ट, इसको कनेक्ट मार दें। फिर आ गया, एक और आ गया द एंजल नेस्ट पॉडकास्ट, इसको ऐड कर लें। तो आप बेशक कनेक्ट कर लें, चाहे आप उनसे बातें करें, लेकिन आप दिन में 4-5 लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दें, जो पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है? ये आ गए जी टॉक्स अबाउट पॉडकास्ट, टॉक बेकर, मैरी मैक, ये पॉडकास्ट के बारे में बात करती है। तो आप इस जो खुद पॉडकास्ट कर रहा होता है ना, और आप उसकी पॉडकास्ट को जाएँ स्टडी करें कि वो कौन है, किस तरह की पॉडकास्ट करता है, कितने व्यूज़ आते हैं उसकी पॉडकास्ट पे, उसकी पॉडकास्ट को कौन लोगों के ऊपर वो क्या टॉपिक पे बात करते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप उनसे दोस्ती करें, उनको अप्रोच करें और उनका 2-3 पॉडकास्ट देखें, और उसके बाद ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ इस वक़्त हम्माद हैं। हम्माद दुनिया के टॉप कनेक्टर्स में से एक हैं। ये किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं करते, लेकिन ये कनेक्शन बनाने के सुपर मास्टर हैं। ये नेटवर्क्स बनाने के सुपर मास्टर हो चुके हैं। तो अगर हम्माद ये जॉब करना शुरू कर दें, तो बहुत आराम से ये कपल ऑफ $1000 अ मंथ बना सकते हैं। 2000 $5000 बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनका जो नेटवर्क ऑलरेडी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ इसके 100 म्यूचुअल फ्रेंड हैं। तो जो मार्क ज़ुकरबर्ग जिससे दोस्ती कर रखा हुआ है, उनके साथ 100 के साथ तो ये दोस्ती कर चुका है। तो अब अगर मार्क ज़ुकरबर्ग देखेगा, अपनी फीड खोलेगा, देखेगा ये कौन है? 100 म्यूचुअल फ्रेंड, ये कौन भला है भाई? 100 कॉमन फ्रेंड है हमारे, तो हमें इससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। ये जो फ़ॉर्मूला है ना म्यूचुअल फ्रेंड का, वो बेसिकली ट्रस्ट है कि मिसाल के तौर पे आप, वो कह रहे हैं 120 हो चुके हैं। तो मिसाल के तौर पे आप किसी के घर जाते हैं,
तो हम नॉर्मली इस तरह बोलते हैं ना, मैं फलाना की बेटी बोल रही हूँ, या फलाना की बहनोई बोल रही हूँ, या फलाना की बहन बोल रही हूँ, या व्हाटएवर आप रिश्ते जोड़ते हैं, डाखाने में लाना जिसको कहते हैं। और जितने ज़्यादा रिश्ते आप बता देते हैं उतना अच्छा, अच्छा, अच्छा तुम इनको भी जानते हो? चलो फिर तो तुम ट्रस्टेबल हो। तो इसी तरह से गोरा भी ये देखता है कि आपके साथ कितने म्यूचुअल फ्रेंड हैं उसके। अगर आपके साथ उसके ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड हैं तो कहेगा अच्छा हमारे इतने म्यूचुअल कनेक्शन है, वो खोल के देखेगा फ़ौरन कौन है आप लोग? कौन-कौन कॉमन फ्रेंड है? अगर उसको आप पे शक होगा तो वो उनको फ़ोन करके पूछेगा ये कौन है भाई? और जाके कनेक्शन वेरीफ़ाई हो जाए। तो अभी तक टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी इंफीरियर है, तो अभी तक वो वेरिफ़िकेशन की प्रोसेस मैनुअली हम करते हैं। थोड़े दिन के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। एआई ये काम कर रही होगी जो हम ये काम बनाने का कर रहे हैं, वो एआई खुद ही रिश्ते जोड़ रही होगी, बैठी इससे मिल लो, इससे मिल लो, इससे मिल लो। सो अभी जो है वो यही है कि आप अपने पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स को पकड़ें, आप टॉप पॉडकास्टरों में शामिल हों, आप स्टूडियो में आके पॉडकास्ट शुरू करें अपनी, जाके आपकी हाई क्वालिटी की पॉडकास्ट नज़र आना शुरू हो। लोग क्वालिटी देखते हैं अब कि किस क्वालिटी की पॉडकास्ट है। अम, तो फिर आप इंटरनेशनल पॉडकास्टर कम्युनिटी से कनेक्ट हों, तो आप पॉडकास्टर आज के इस ज़माने का एक बड़ा कनेक्टर बन जाता है, क्योंकि उसके उसको लोग जानना शुरू हो जाते हैं। इसको लाइट हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और लाइट हाउस इफ़ेक्ट में ये होता है कि वो लाइट हाउस, जैसे किश्ती आती थी पुराने ज़माने में, तो लाइट हाउस को लाइट मारती थी कि जी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। पहले तो कोई हमारा रेडियो तो था नहीं, टेलीफ़ोन तो था नहीं, तो वो लाइट मार के बता देती थी किश्ती कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो लाइट हाउस के पास वो सारे लोग आते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम भी होता है, जिनके पास सॉल्यूशन भी होता है, जिनके पास कैपिटल भी होता है, जिनके पास मज़ीद कनेक्शन भी होते हैं, तो उसके पास कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो जो भी ज़्यादा पॉडकास्टिंग कर रहा होता है या जो भी पब्लिक फ़िगर हो जाता है, उसके पास कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। उस कनेक्शन बढ़ने के अंदर वो कनेक्शन ऑफ़िसर बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि जैसे हम ईद पे किसी के घर जाएँ, तो वो जिसके घर जाते हैं, वो सबको जानता है। तो वो उससे जाके हम कहते हैं मुझे इससे मिलना है, तो वो आपको उस आदमी से मिला देता है। तो हम किसी की शादी में जाते हैं, तो जिसकी शादी में जा रहे होते हैं, वहाँ पे वो सबको जानता है, वो लाइट हाउस होता है उस जगह पे। तो हम इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ ये जो हमारा इंसान पार्टी है, वो भी लाइट हाउस बनाने की कोशिश कर रही है। अम जो हमारे जो वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी लाइट हाउस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो लीडर हो जाता है एक तरह से। कारोबार वाला है, तो कारोबार वाला किसी को अगर बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा, तो फ़ौरन बोलेगा, "आप कारोबार वाले क्यों हैं? मुझे बहुत इंटरेस्ट है कारोबार में, मुझे बताएँ इसके बारे में।" तो आप कन्वर्सेशन चेंज कर देते हैं, टॉपिक चेंज कर लेते हैं बहुत क्विकली। कोई सवाल हो तो बताइए? हाथ उठाइए। किसी को कोई सवाल नहीं? जी, ख़ारुख। मेरा रेहान भाई थोड़ा यही सवाल है कि अब प्लान ऑफ एक्शन, जैसे आपने सादिया कॉन्फ्रेंस वाली को बता दिया कि वो ये करेंगी, तो और लोगों के लिए भी ये, या सिर्फ इनके लिए ये है प्लान ऑफ एक्शन? इन्हीं के लिए है, आपको इसलिए दोनों को मद्दू किया था क्योंकि आप टॉक ट्यूब को भी जानते थे, आप इंटरव्यू स्कूल को भी जानते थे, इमरान भी टॉक ट्यूब को जानते थे, इंटरव्यू स्कूल को जानते थे। सादिया को टॉक ट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है एज़ फार एज़ आई थिंक। तो आपको इसलिए बिठाया था क्योंकि आप उसको समझा सकते थे, वो बाद में भी समझा सकते हैं। सो सादिया, टॉक ट्यूब का कॉन्सेप्ट ये था कि एक मार्केट हमने बनाई थी अमेज़न, दराज़ की तरह, जहाँ पर इंटरव्यू करने वाले भी बैठे हों, इंटरव्यू लेने वाले भी बैठे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं शाहरुख खान का इंटरव्यू आप करें, तो शाहरुख खान का इंटरव्यू करने की फ़ीस अगर शाहरुख खान कहता है मैं 25 लाख रुपए चार्ज करूँगा 1 घंटे के इंटरव्यू के, तो जो टॉक ट्यूब है, उसकी जॉब ये है कि वो अपना 20% कमीशन रखेगी और आपका इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले देगी टॉक ट्यूब के ज़रिए शाहरुख खान से। तो इसी तरह की एक और सर्विसेज़ हाल ही में भी शुरू हुई है। शाहरुख मुझे उस दिन दिखा रहे थे कि आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, वीडियो चाहिए,
तो वो बना के दे देते हैं, वो मार्केट बन जाती है एक तरह से। तो मैं एक नई मार्केट बनाना चाह रहा था इंटरव्यू की, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इंटरव्यू एक सब बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन लोगों को उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। और जिनको अंदाज़ा है वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं है वो उसको नहीं हाथ लगाते कि नहीं बेकार सी चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं क्योंकि स्कूल बनाया था, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, जब हमने स्कूल बनाया था पहले, सबसे पहले क्या नाम था उस बच्चे का बेटा, इमरान? एस से जो नाम है उसका, जो वहाँ रहता है हारूनाबाद में, शाहज़ेब है क्या? शाहजेब। शादी इकबाल। राइट। तो सबसे पहले हमने शाहज़ेब को जॉब देने के लिए ये वेबसाइट बनाई। उसके बाद शाहज़ेब को कोई बात बुरी लग गई तो वो चले गए। उसके बाद सादिया आ गईं। वो दूसरी नहीं, क्या नाम था उसका? दूसरी जो आई थी? सिदरा सिदरा। सिद्रा आ गईं। सिद्रा ने उसको चलाया, लेकिन जितना अच्छा चला सकती थी उन्होंने चलाया। थोड़ा-सा बड़ा हो गया तो हम क्या करते थे, हम लोगों को इंटरव्यू करने के एनकरेज करने के लिए पैसे देते थे, कि आप पहले 20 इंटरव्यू फ्री करेंगे, उसके बाद आप 50 तक लोग पहुँचना नहीं चाहते, 20 के बाद या 10 के बाद थक जाते हैं। तो हम उनको एनकरेज करने के लिए एक-एक इंटरव्यू के ऊपर ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 देते थे कैश। ये फाउंडेशन इसलिए देती थी जाके लोग कैमरे पे आएँ, बात करें। हमने 6000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ करवाए लोगों के। तो लोग बाज़ार में, ये पॉडकास्ट का पूरा बाज़ार शुरू हो गया, लोग इंटरव्यू नहीं देते थे। तो हमने वो ज़मीन तैयार करी, जिसकी वजह से लोग अब इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ये सब अ, समझे, ज़मीन को तैयार किया कि पौधे उग सकें वहाँ पे। और उसके बाद वो जब वो चली गई तो फिर ये सारा का सारा काम रुक गया। कल मेरी बात हो रही थी मनाहिल से, मनाहिल को एक जॉब ऑफ़र आई थी कि जी हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो मनाहिल क्योंकि हमारी टॉप स्टूडेंट मैं कंसिडर करता हूँ, अंग्रेज़ी भी बात कर लेती है, इंटरव्यू ले ली थी, तो मैंने उसको मना कर दिया कि ये जॉब आप नहीं करेंगी, ये आपके लिए नहीं है, इट्स टू राइट जॉब नहीं थी वो। जैसे रिश्ता आता है ना, तो उस तरह मैंने कहा नहीं आप नहीं कर सकती। तो मैंने उनको ऑफ़र करी मनाहिल को कि मनाहिल मैं आपको ₹100 दूँगा पर इंटरव्यू, अगर आप किसी का भी इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगी, इंग्लिश स्पीकर का इंटरव्यू करेंगी। और यही ऑफ़र मैं अब स्कूल में भी सबको दे दूँगा, कि जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के और जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगे तो उनको ₹100 मिल जाएँगे। उनकी आमदनी शुरू हो जाएगी एक तरह से। दूसरा ये कि उनको कोई अम इंसेंटिव मिल रहा है ना। हम लोग ज़्यादातर तनख़्वाह, हम लोग ईदी पे कितना खुश होते हैं, ₹100 ईदी होती है लेकिन इतना खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कमा लिया। तो इसी तरह से इन बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए हम वापस ₹100 इंग्लिश में इंटरव्यू करने के लिए हम इनको ऑफ़र कर देंगे। वो आप मैनेज कर लीजिएगा फंड, कि भई आप इंटरव्यू चेक करें, देखें कि वो 25 मिनट का है या नहीं है, अंग्रेज़ी में है या नहीं है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जाके ये जो जो 500 इंटरव्यूज़ जब हो जाएँगे अंग्रेज़ी में, तो कुछ हमें ऐसे अंग्रेज़ मिल जाएँगे, जिनसे जो बहुत खुशी से इंटरव्यू देना भी शुरू कर देंगे। जैसे कार्ला मिल गई हमको, तो कार्ला को भी पैसे मिलते थे इंटरव्यू लेने के, अभी भी मिलते हैं। तो जाके वो एनकरेज हो, उसको पैसों की ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू एनकरेज करने के लिए हम ये पैसे देते थे। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलता है कि देखिए ना, कार्ला वो शिफ्ट हो गई पाकिस्तान। जब आप ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, तो आपके दिमाग में से जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ जाता है। और ये है मेरा इंटरेस्ट कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट की मिकदार बढ़ाने के लिए ये सारे इकदामात किए जा रहे हैं कि लोग ट्रस्ट करें। जी, तो टॉक ट्यूब बेसिकली वेबसाइट शायद पता नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन वो मार्केट प्लेस का सॉफ्टवेयर बनाना था, तो वो लड़का चला गया। जो वो चलाता था वो भी काम नहीं करता, उसने भी दोस्त के 2 इंटरव्यू करने होते थे, वो भी नहीं करता था। सो अ, ये है। जी। अच्छा सर, मुझे स्कूल जाना होगा, बच्चों के साथ कोई मीटअप रखना होगा, बच्चों को सिखाना कोई बात या ये बातें बताने के लिए मुझे जाना होगा, स्कूल विज़िट करना ज़रूरी है।
है मेरे लिए? आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे इनकरेज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा चली जाएँगी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझा सकेंगी। नहीं तो इमरान समझा देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं समझा सकती उसको। जी, शाहरुख कोई सवाल? नहीं रेहान भाई, कोई सवाल नहीं। ठीक है। सादिया बेटा आपको समझ में आया? सर मेरी समझ में तो आया, लेकिन एक सवाल मुझे आपसे पूछना था कि जी। जब हम किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं ना, हमने मैसेज कर दिया और उसके बाद हमने फिर मैसेज कर दिया, फिर हमने दोबारा मैसेज कर दिया, लेकिन मैं ना मुझे डर लगता है कि मैं कॉल करूँ किसी को। मुझे कॉल करते हुए बड़ा डर लगता है, मैं कहती हूँ पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, कहीं डाँट ही ना दे। ये फ़ियर नहीं निकला अब तक मेरे अंदर से ना। तो और जब मैं कॉल करती हूँ तो आज मैंने जैसे लुबना पंजवानी को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छे तरीके से बात की। हाँ, बस उन्होंने ये कह दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं देती हूँ, मुझे आदत नहीं है और मैं इंटरव्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस ये बात थी, लेकिन ये मुझे डर लगता है कि मैं बस मैसेज ही करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग इसी तरह पीछे रह जाते हैं कि मैं मैसेज करती रहती हूँ। जो कॉल पे बात कर लेता है उससे तो बात हो जाती है। वो तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनके स्पेशली जिनके नंबर्स दिए जाते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़े लोग हैं और मैं इनसे कॉल कैसे करूँ? तो आप उनसे मैसेज करके पूछ सकती हैं, कैन आई कॉल यू? सिंपली। और अगर वो कहें कि नहीं अभी नहीं कॉल करें, ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं और बड़ी उम्र के जो पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर, वो फ़ोन कॉल को पसंद करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी ना क्यों ना हों। मिनिस्टर लेवल के भी होते हैं, तो मैंने यही देखा है कि वो टेलीफ़ोन कॉल को पसंद करते हैं। शायद मैं एक ही अखरोट हूँ जो इसको कॉल ज़हर लगती है बिल्कुल। तो बाकी जितने लोग हैं उनको लगता है खाना ही हज़म नहीं होता जब तक वो फ़ोन पे बात ना करें। तो कॉल आप कर सकती हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ा यही है, नफ़ीस तरीक़ा यही है कि आप उनको मैसेज करें, आप उनसे इजाज़त लें और फिर अगर वो कहें कॉल कर लो तो आप कॉल कर लें। मुल्क से बाहर वालों को तो कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम का नहीं अंदाज़ा कि किस मुल्क में हैं, कहाँ हैं, किस वक़्त क्या हुआ है। तो गूगल का इस्तेमाल आप थोड़ा-सा कम करती हैं, वो ज़्यादा किया करें कि जिस मुल्क में बंदा रह रहा है उस मुल्क में अ, क्या टाइम हुआ है। तो अ, उस पे जवाब आप दे सकते हैं। मतलब वो आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम हुआ है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो कल से इमरान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अंग्रेज़ों के साथ ग्रुप बना के ज़रा इंटरव्यू शुरू करवाएँ। आपको भी हेज़िटेशन है, बाकी तमाम लोगों को ही हेज़िटेशन है, लेकिन आप जब तक इस हेज़िटेशन को कॉन्कर नहीं करेंगे चीज़ हासिल नहीं होगी कोई। सर मुझे पता है वही हेजिटेशन है जो इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए हुई थी। वही हेजिटेशन है जो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बोल सकूँगी। स्टार्ट विद द फर्स्ट इंटरव्यू था और सेकंड इंटरव्यू था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो बोल ही नहीं सकती कुछ भी कैमरे के आगे। अब क्योंकि उर्दू बोलने की तो आदत हो गई है, लेकिन अगर इंग्लिश में मैं आपको रोज़ टारगेट देती हूँ कि मैं इंटरव्यू करूँगी, इंटरव्यू स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो जैसे ही मुझे कोई मिलता है तो मैं शुरू कर दूँगी। इसमें अब मुझे थोड़ा फ़ेयर कम हो गया, 3 इंटरव्यूज़ कर लिए तो थोड़ा कम हुआ है। जैस्मिन के साथ भी किया था। चाहिए तो आप जैस्मिन का दोबारा कर लें, तिबारा कर लें, जी। वो कर लेंगे। स्कूल का मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी बहन ने लिखा है कि मैं अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे दूँगी, तो स्कूल के बच्चों को कोई पाकिस्तानी का इंटरव्यू अंग्रेज़ी का करने की ज़रूरत नहीं। अंग्रेज़ ही का होना, कोई नॉन पाकिस्तानी फ़ॉरेनर होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी रहता है अमेरिका में, वो काउंट नहीं होगा। करें ज़रूर इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने एज़ अ स्टूडेंट रोज़ाना एक स्टूडेंट का एक ने हर रोज़ इंटरव्यू करना ही करना है। उस पे उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो अंग्रेज़ का इंटरव्यू करते हैं, जो नॉन पाकिस्तानी हैं, तो उनको ₹100 मिल जाएँगे एक इंटरव्यू करने के एज़ अ स्टूडेंट। फिर क्योंकि असल जो डर है वो यही है कि जी ये कौन है? ये तो पाकिस्तानियों से बात कर लेते हैं, नॉन पाकिस्तानी से बात नहीं करने को तैयार है।
तो ये मुश्किल काम है, इसीलिए तो उस पे इनाम मिल रहा है। आसान काम पे कौन इनाम देता है? जी, और कोई सवाल? सर मुझे आप बताइएगा कि मैं और अपने काम में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकती हूँ बजाय इंग्लिश के अलावा? आपका काम बिल्कुल ठीक है। आप जो वीकली मीटअप है उसमें शिरकत करना शुरू करें और वहाँ क्लासेस शुरू करवाएँ इंक्यूबेटर में। लोगों को क्योंकि आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है, फ़ायदा क्या होगा, तो दे आर नॉट वेरी कीन ऑन इट। पब्लिक स्पीकिंग अभी भी थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आ गई है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे भी बोल सकती हैं कि जी मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाती हूँ। तो वो ज़्यादा खुशी से आ जाएँगे। तो आप यही प्रॉब्लम है, बस आप उसको ज़्यादा करें, अपने लिए पैसे कमाना शुरू करें। जब तक आप नहीं पैसे कमाएँगी, आप अपनी कॉलोनी खरीदेंगी, तो आपको भरोसा नहीं आएगा कि यार ये सब क्या हो रहा है, हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। और ये जो इन्हिबिशन है आपके अंदर ज़्यादा पैसे ना लेने का, वो यही है कि कल मैंने जब मनाइल को ऑफ़र किया कि जी बेटा मैं आपको पैसे दूँगा, तो उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि जी मैं इंटरव्यू के पैसे नहीं लूँगी। तो मैं जो समझा रहा था वो बात भी इसीलिए कि आपने शाहरुख फ़ोन करके उनकी अम्मी को समझाना है कि ये क्यों किया जा रहा है और इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, उनके अंदर जो इन्हिबिशन है वो उनके अंदर जो हिचकिचाहट है उसको निकालने के लिए इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। अ, वो आप कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं सीखने के लिए कैसे पैसे ले सकती हूँ? मैंने कहा भाई तो सीखने के लिए पैसे ले सकती हूँ। अभी हमारे स्कूल में एक बच्चे की कॉस्ट हमें तकरीबन 10 से 15,000 रुपए महीना आ रही है। तो हम पैसे जेब से भर के बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो उनके अंदर वैल्यू ऐड हो जाए, वो इस लायक हो जाएँ कि वो पैसे कमा सकें। अभी वो इस लायक नहीं है कि उनको कोई पैसे दे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो बिरयानी और उनकी रोटी इतनी ख़राब है कि हम उसकी दुकान नहीं खोल सकते। तो वो अच्छी होगी तो अ, hi Mara, if you can join in the conversation, I will be happy to explain the same in English to you. That will be wonderful if you can join. Here's एक और क्वेश्चन वहाज ने किया है। वहाज जो थे बतौर असिस्टेंट काम करते थे और एहसन के, और वो इसलिए हमने रखा था क्योंकि वो अल्लाह वाला टाउन में रहते थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको डेवलप कर सकूं। तो इनका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। I don't understand is that if you want to teach people how to earn 100,000 per month, but you pay very basic salary to your employees like 20,000, 25,000. I'm not against you, but when I listen to you, it seems that you're bringing change. But when I see your subordinate, it seems that you just want to show off. If you want to change the world and also Pakistan, you should change your people first. Teach them how to earn 100,000 rupees a month in this time of inflation, not those who have nothing to। उसके बाद टूटी है। मेरे ख्याल में शाहरुख इसका जवाब दे सकते हैं, अगर आप शाहरुख जवाब दे दें। पहले शाहरुख जवाब दे देते, फिर इमरान देते। बहुत अच्छा सवाल है, मैं उर्दू में रिपीट कर देता हूँ कि आप बोलते तो हैं कि 1 लाख रुपए आमदनी सब कमाएँ, लेकिन आप अपने लोगों को सिखाते नहीं हैं। बहुत प्यारा सवाल है, आप अपने लोगों को सिखाते नहीं हैं कि 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। तो आपको शर्म आनी चाहिए वहाँ जी सवाल करते हुए। लेकिन बहरहाल चलें, मैं शाहरुख को और इमरान को पहले अपॉर्च्युनिटी देता हूँ कि वो जवाब दे दें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि ये भी तो वही 25,000 रुपए वाले हैं। जी। जी शाहरुख। Mara, give me one moment, so I'm answering a question, then you can join in. शाहरुख स्टक हैं, इमरान आप दे दें। जी। मुझे जहाँ तक याद है अच्छे तरीके से, जिन शख्स ने मेरे भाइयों की तरह छोटे ये सवाल किया है, मुझे आज भी याद है कि ये बच्चा हमारे पास फेलोशिप
के प्रोजेक्ट के अंदर आया था, जिसमें इसको हमने हायर किया था 15 से शायद 25,000 रुपए की सैलरी पर। आज ये बच्चा इतना काबिल हो चुका है जो कि 70 या 80,000 रुपए के करीब माहाना की सैलरी पर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ये जो सवाल इस बच्चे ने किया, बेशक इसकी अपनी सोच थी, थिंकिंग थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद अगर ये बच्चा इस बात की अहमियत को समझ जाता कि जब मैं 20 से 25,000 रुपए फॉलोशिप के अंदर काम कर रहा था इसी कंपनी में यहाँ पर, और आज मैं 50,000 से ज्यादा 70-80,000 रुपए की सैलरी पर इस वक्त जो मौजूद हूँ, तो ये किस वजह से है? क्योंकि इस बच्चे को हमने डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा, डिफरेंट जगहों से गुजारा, और डिफरेंट ऐसे असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी इस बच्चे को रखा गया, जैसे कि एहसन सलीम कठोरिया साहब हैं और दूसरे तमाम तर फाउंडेशन के जो बेहतरीन लोग थे। तो इस बच्चे ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करके, डिफरेंट जगहों पे काम करके वो तजुर्बात हासिल किए, वो कनेक्शन अपने बिल्ड किए। यही फ़ायदा रेहान फाउंडेशन का जो एक्चुअली बेसिक मकसद था, अब अगरचे मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, तो वो ये था कि जैसे कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं 10 से 15,000 रुपए की माहाना नौकरी के लिए परेशान था। लेकिन मैंने गुज़िश्ता 5-6 साल में खुद पर इतना काम किया, अपनी शख्सियत को इतना डेवलप किया, इतना मैंने सीखा, अपने कनेक्शन और नेटवर्किंग से इतना सब कुछ सीखा जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब की जानिब से। तो आज मैं उस 10-15 हज़ार से 4-5 गुना ज़्यादा माहाना अर्न कर रहा हूँ। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि रेहान फाउंडेशन या रेहान फाउंडेशन का कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ यहाँ पर कि मैं महीने का 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहा, तो देखिए इसमें कसूर या फॉल्ट जो है वो मेरी खुद की कैपेबिलिटी का है, मेरी लर्निंग का है, मेरे सोचने समझने का है। मेरे पास इस तरह का खुलेआम एक मैदान पड़ा हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जहाँ पर मैं बेशुमार फवायद हासिल कर सकता हूँ अपनी उस नेटवर्किंग से, उस प्रोजेक्ट से। मिसाल के तौर पे हमारे डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि AI डिपार्टमेंट है, वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट है, हमारी एक दूसरी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उसके अंदर बेशतर डिपार्टमेंट है, हमारे पास मिलियन कोडर्स का एक डिपार्टमेंट था। अगर मैं चाहता, अगर मेरी ख्वाहिश होती कि मुझे ये फला फला काम सीख कर मैं चाहता, तो उससे कहीं गुना ज्यादा आगे बढ़ जाता, क्योंकि हमारे पास इस तरह की भी मिसालें मौजूद हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो बच्चे आए, छोटी छोटी बेसिक सैलरी पे आए, और अब इस वक्त वो 1-1 लाख रुपए, 2-2, 2.5-2.5 लाख रुपए की सैलरी पर काम करें, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मकसद यही है रेहान फाउंडेशन का कि उन बच्चों की सलाहियतों को निखारना, निखार कर उन्हें आगे इस तरह से पेश करना कि वो फिर खुद इस काबिल हो जाए। अब ये डिपेंड करता है इंसान की खुद की ज़ात पर, खुद की ज़ाती शख्सियत पर, खुद की लर्निंग पर। तो मेरा तो इस हवाले से यही मानना है, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि मैं गुज़िश्ता 5-6 साल से देख रहा हूँ, 7-8 साल से आपका मैं फॉलोवर हूँ। मुझे भी स्टार्टिंग में इसी तरह का लगता था, मेरी भी यही अजम्पशन थी कि शायद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब आप सब्र, तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक चीज को देखना शुरू करेंगे, जांचना शुरू करेंगे, उस पैमाने से गुजरेंगे, कुछ इम्तिहान आप भी देंगे, कुछ इम्तिहान वो भी देंगे, तब जाकर आपकी शख्सियत में वो निखार पैदा होता है, आप इस काबिल होते हैं। इसी तरह जैसे कि हमारे साथ मोहतरमा साजिया कॉन्फिडेंस वाली मौजूद है। एक टाइम ऐसा था कि इनको बोलना नहीं आता था, ये बात करने से डरती थी, घबराती थी, हमारे साथ जब भी मिलती थी, सर 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 ये कैसे होगा सर। अभी इस वक्त ये कॉन्फिडेंटली गुज़िश्ता 1 घंटे से हमारे साथ मौजूद है, लाइव मौजूद है, गपशप कर रही है, बातें कर रही है। तो यही इनकी शख्सियत का एक जो कि मस्बत पहलू है। तो इस हवाले से तो मैं यही वैल्यू इस बात की ऐड करना चाहूंगा। मजीद अगर शाहरुख भाई कुछ बताना चाहें। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे लिए बेसिकली हम जो ये इनका सवाल है कि हम पैसे नहीं देते, रेहान फाउंडेशन एक बस की तरह है जिसका मकसद, जिसका स्टॉप है हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए तक लेके जाना। तो हम जिसको भी इंडक्ट करते हैं तो वो आके उसको सैलरी कम दी जाती है, 1 लाख रुपए अगर हम ही दे देंगे तो उसका स्टॉप तो आ गया। एक्चुअली हम उसको ट्रेनिंग के थ्रू गुजारते हैं, हर तरीके से उसको ट्रैवल कराते हैं, उसको अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजारते हैं, उसको इंटरव्यूज कराते हैं, उसकी शख्सियत में 180 डिग्री चेंज लेकर आते हैं। सही है कि वो इस काबिल हो जाए, उसको एक वाला असाइन कर देते हैं, उसको जिंदगी का गोल दे देते हैं कि जी अब आपको अपनी पर्सनैलिटी मिल गई है, व्हाट यू आर बॉर्न टू इट, क्यों पैदा हुए थे, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है,
और आप ग्रेजुअली जब 1 लाख रुपए पहुंच जाएं तो आपका स्टॉप आ जाए, आप उतर जाएं उस बस से, एंड हम दोबारा किसी को इंटरेक्ट कर लें की चीज है। तो रेहान फाउंडेशन इज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। ये इदारा पैसे देने के लिए नहीं है, ये लाइफ चेंज करने के लिए। तो मैं तो उसको एक बस की तरह कंसिडर करता हूँ बेसिकली। शाहरुख, इन्होंने आपकी कितनी क्लासें अटेंड की थी जिसमें इनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी कि आपने पढ़ना है, तो ये आते थे क्लास में पढ़ने के लिए? नहीं, 1-2 दफा हुआ है, 1-2 दफा आए हैं खाली। सही है। तो इनसे गुजारिश है कि ये तहैया करें कि कितने लोगों को पैसे देना चाहते हैं और अपनी मासी को उतने पैसे दिया करें जितने पैसे ये दूसरों को देना चाहते हैं। तो बेसिकली अब आप इस लायक होते हैं कि आप लाख रुपए ले सकते, तो आपको लाख रुपए में रखा जाता। आप इस लायक नहीं हैं कि आपके लाख रुपए में बंदा अगर बाजार में एक वैल्यू होती है ना, वही चीज़ तो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करो कि तुम लाख नहीं 10 लाख के हो जाओ। और अगर 10 लाख के हो जाओ फिर भी रुकना चाहो तो रुक जाओ, नहीं रुकना चाहते हो तो खुशी से कहीं चले जाओ, जा सकते हो तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई गम नहीं है। हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारा जो काम है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हम अगर दे सकते होते तो देते, अभी भी देते हैं बहुत सारे लोगों को। 1 लाख से बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। और मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि जिस कंपनी में आप थे वहाँ कम से कम $2000 हम पाकिस्तान में सबको दें। कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, इंशाल्लाह वो वक़्त भी आ जाएगा कि हम सबको कम से कम 6 लाख रुपए महीना दें आज के हिसाब से। Hi Mara, thank you for joining. How are you? You wanted to know what you're doing, what we're doing? So I was like, oh, sorry. So I started a school. It's called the Interview School some years ago. And now the new boss of that school is Sadia Confidence Wali. And I was just most people don't really want to do the interview thing. They really don't get it. Why am on earth am I supposed to do interview? What am I going to get out of it? So the internet has allowed us to bring a lot of new opportunities, a lot of new job roles, job titles. So today I came up with a new concept called the Chief Connection Officer. And as a Chief Connection Officer, anybody who gets training for it would be able to work as a freelancer or a full-time job like an HR manager or an HR consultant, um, to build bridges for the company itself. So say you are working in a hospital or you're working as a nurse, but now you want to transition to a better value job, a different value job, which is a chief connection officer. So as a chief connection officer, we will teach you how to first um, do this networking thing on LinkedIn, but that is already a lot of people are doing. But a connection on LinkedIn is not going to share you their number most of the time or give you an appointment right away. But if we make that connection sitting remotely anywhere in the world and do a podcast with them or an interview with them over Zoom, and then broadcast it on our network, they give some value. They get some value all of a sudden from that connection. And by building that connection, we have now earned a little bit of credit and trust from them, and then we introduce that trust to the rest of the company or an organization where we're working. So that's the role I am trying to coin here, because I have seen that because of this role missing, a lot of people on the planet, a lot of organization on the planet miss the boat of knowing another organization which does similar work in another part of the world or in their own city, and they don't have that trust within the organization or among the planet. Therefore, they lose on this opportunity. So here is a new role which Sadia will give training on, so that people can take that role and do this role as a job, especially women, because women have children and they only have few hours a day. They don't have, I don't want them to lose money on the commuting time. I want them to be able to act as a connector anywhere on the planet, to connect two organizations together, so that they can do, create more abundance in the planet. That's the role which we are offering to.
Does that make sense? Yeah, it makes sense. I think You, that do you have most positions like depend on their employees to have resources and connections. But as an individual role, like I'm not sure how that would exactly work. I know that you're like the master connector. I mean, you connect so many people to so many other people, which is very helpful. So I see the value in it, but I don't know how you're going to market it, but I think it's great. As a nurse, I am nothing without my resources and being able to connect my patients to the right people when they have needs. If they're like low income, how do I get them to food pantries? How do I get them to um, like how do I help them find transportation if they don't have transportation to their doctor's appointments? How do I help them get discounts on their medications? So yeah, I understand how important it is, but I'm interested to see how you do it and how you move forward with it. Yeah. So the process. You want to know the process of how we will be doing it? So we have created a education institute in Karachi, where Sadia is going to give workshops about this position and how to become an interviewer and a public speaker. Public speaker is something which people do understand already, a motivator already they understand in Pakistan. It's not seen as a very positive role because a lot of people think that a motivator is just comes in, gives a lecture and goes away and doesn't really do anything. So, but still, we want people to learn this. But that's not enough for me. So I want to create this role where people can actually add on value. So we're going to try it. We're going to experiment with this. We are also going to offer this as a service on the freelancing platform, so that people who want to take it as a service and see the value in it, we can, or the students which we graduate can then get this as a job. I don't think it's going to become overnight success, but it's something I want to definitely try because it makes a better world around us. And you have taken, I don't know if the advantage is the right word, but benefit maybe because of those connections personally many times. So you know the benefit, and you have seen Carla moving to Pakistan. That's a huge benefit, and that builds trust. And basically, it's a trust building effort. Um, I think if there were people doing this individually or as an organization between India, Pakistan, Israel, Palestine, Ukraine, Russia, US, wherever, people will need to reduce their army budget because we spend $2,000 billion a year, every year, on army in trying not to talk to each other, basically trying to protect our ideology instead of sharing our ideology more on the internet. So I'm giving it my 2 cents to the world to engage more in conversation. I think when I look at my essence, this is what most people look at me at, as like a connector. So I want to teach it to more people who want to basically be able to connect the world. But in order to connect, first you have to be confident. You have to have the trust in yourself, and then you can move forward with that. That's what we're trying to build here. One thing I'd like to mention is like I've experienced both sides of it, but like those people that you're building up as connectors, they need to move forward into it rather than in which to propagate themselves. Like it's to help, like if they understand that they're helping to propagate the person that they're interviewing, like most of the time when I've been interviewed, not many of the times that I've been interviewed, it's like they're not really actually caring about what I'm doing. They're caring about they need to do this interview to get a point towards what they're trying to do for you. Like not because they're at all interested in anything that I have to do. And the questions reflect that, and I don't want people to see it like, especially like when they're speaking to English people or English speaking people, as like
they're being used because it's going to leave a bad taste in their mouth. I want the people in Pakistan to be successful, but they need to look at it in a different way, and move forward to, make the people that they're interviewing feel important, and not just a check mark off of Rayhan's list of things to do. But you can say that about anything. You go to a wedding, there are 100 people, you talk to 20 people, 19 people are not interested in you. They're just talking about themselves. They're not really keen on you. And that's their attitude. And then you find one person, oh my God, he's really or she's really interested in actually talking to me. So it's a process. And that process allows them to become a little bit better, knowingly or unknowingly. So for example, we went through school, not everybody enjoyed every single subject. But it allows us to see who is better in what and who is it's a filtering process. Life is also a filtering process of finding the right people, finding the right partners, finding the right friends. It takes a lot of time to go through this, and this is another process which was not possible before, but now it is possible when we do it publicly. Maybe Imran and Mara are talking, and then Imran is just doing a points thing, but then there's somebody watching on Imran's network who really think Mara is amazing, and then he or she reaches out to Mara and asks the real question. So that's a filtering process. And if Mara sticks and gives the best answer she can, she might find another person who will come and say, and he or she might be phenomenal. So it's a process. It's not that everybody is going to understand what we're doing. Um, I don't know any other way to do it better, but we're teaching, we're trying our best to coach them, guide them, but not everybody listens, right? So everybody's different. I wish everybody was born with a manual or saying, oh, my ikigai is this, this is what I'm supposed to do in the world. And then we really wouldn't have to go through this process. The process would be faster. And in future, I think AI will help us do this, because eventually we will discover ourselves through our AI. AI will tell us, this is what you should be doing. This is not what you should be doing. This is what you're good at. So till then, this is the mistake. This is the dirty is not the word, but this is the messy process of finding the right partner process in the life. So since you're here, Sadia is a little shy in speaking in English, so maybe you can help her out a little bit and speak with her a little bit before she runs away. Hi, Sadia. How are you? I'm fine. What about you? I'm doing pretty well. It's a beautiful Saturday afternoon. I'm on my backyard. I don't know if you guys can see it. And there's a pond over there. Oh, really nice. The pond. Can Huh? you walk up there? Can you walk up to the pond? I don't know if I'll have connection. Here, can I turn my cam the other direction? Yeah, I'll turn just it walk and back. show as much as you can. Okay, how do I turn my camera? I don't know. No, that's not it. How do you rotate your camera? I don't know how to do that. You cannot turn. I can't rotate it? Okay, I'll just walk backwards, or I'll walk this way. Hazel, you stop. My dog's losing her mind. Can you guys see it? Do you see it over there? Yes. Can you show our house? Can you show your house from outside? Over there. But I think I'm going to lose my connection because it's not very good. Huh? I didn't hear you. What? Come back near the house and show me the house from outside. It's an apartment complex. So that unit with the door open, right there with the dog, is mine. I thought you had a mansion or something. Where I live.
My house is a mess. I don't want to show you inside my house. I mean, it's not like terrible, but it's not great either. But I'll show you No my problem. puppy. Hey, Hazel. Hazel, say hi to everybody. You're on camera. Say, oh, don't lick my mouth. This is my puppy. Say hi, Oh, Hazel. So yeah, this is where I live. this is good enough. So help Sadia build a little bit confidence in English. Okay, let me just shut this door. I'm gonna come inside. All right. So tell me a little bit about yourself, Sadia. I know I've seen you, but I've never really had much opportunity to meet you. Yes, I am Sadia Confidence Wali, and I belong to Karachi. And my aim to overcome the poverty from Pakistan. And I have a digital earning school. Its name is Sadia Confidence Valley Digital School, and I'm the online trainer. Wonderful. How long have you been doing that? In 3 months. In the last few months? That's fantastic. Yes, What yes. has been the most rewarding part of this process of building this school? Mm, uh, this is very interesting process. The students are very interesting students. They are shy and they don't have confidence. I will give lecture. I give lecture and motivate them. And it's rewarding to see them grow and start building their own confidence, isn't it? Yes, yes. Oh, that's fantastic. Yes. I can really relate as a nurse. Like I a lot of times work with patients that um, have like bipolar schizophrenia, and so like I see them before they start their treatment, and they can't have regular relationships with their neighbors or their relatives, and to see them like once they start using the medication to really be able to interact with their families, be able to get a job, and to be them see them become more successful. It's so rewarding. So it's similar, very similar. That's Mm, fantastic. that's And fantastic. what is your goal in the next few months? Few months. Mm-hmm. Not. I want to overcome poverty from Pakistan since 2030. Okay. In the next few months, you're going to overcome poverty. No, no, Okay. What is your goal for the next few months? Like 3-4 months. 3 4 months. Mm-hmm. I want to establish my school and uh, I want students come in my schools and they learn more and more from me. Oh, that's wonderful. And I think you're going to do a great job. Imran, you had your hand raised? Yes. I think Imran was raising his hand. No? Okay, okay. Um, and let's Mara, see. please help her find some customers in the US because she charges like $5 a month and for teaching graphic designing. So she could charge so much more money if she were to do it to Americans. I mean, it's the same skill. You're just doing it, but she's doing it in Pakistan, so she has to earn in rupees, and the rupee value is so low. If she was to teach exactly the same thing, so her whole school is on Zoom, and she's just advertising, and nobody comes to her house, nobody comes and meet her in person, so it's everything is on Zoom. But if she were just to, for example, Nafisa here is also a teacher, and if she were to start her school and do it in the US online, all of a sudden she can start making $1,000 a month easily, which is nothing in the US, but in Pakistan, it'll go a long way. So maybe you can
um, you can build their confidence, and that's my goal. My goal is for these women to start building their confidence. And so for example, your business, which you're doing now, in partnership, so you these girls and women can also do the same. And there's enough business in the US. It's not like they're out of business. I mean, they will help businesses in the US grow. Like, I don't know people, like, I don't know that I know any people. Maybe I do. I haven't You started don't looking you don't for, have to know them. but You I just would have to. suggest like going on like applications that are free to post, like things like The, Craigslist. the problem is, Mara, they don't know what is Craigslist. They don't know you. They don't trust English. They don't trust in themselves. That's the problem. The problem is not finding customers. They know how to find customers. They're just not comfortable in receiving a message with a person who doesn't have a last name as Muhammad and Emma. Just like most Americans are not comfortable in getting a message from a Muhammad or Emma. Similarly, they're not comfortable in speaking to John Smith. So they just need to be able to speak. That's my biggest challenge right now in my institute, in my school. These people are just not earning enough just because of the stupid reason they can't talk. That's about it. There's nothing wrong with them. There's nothing wrong with their art. My students at my school are making phenomenal quality videos, which people would pay $100, $200 easily. And they do it every single day for free, but Yeah. they just can't speak with the person in another, it's just there. I know I can break through it. It'll take me a few months. Carla is there. They don't go and talk to her. They don't? uh they don't, but Carla is Carla. She's like punching people's on the face kind of person anyways, and she scares everybody off, but she doesn't understand. She's not going to change overnight. She's Carla. So She does her best. she does her best. Yes, she is who she is. There's nothing wrong with who she is. It's just that she's very different. She's so different. Even for Americans, she's different. But Yes. she doesn't get it. I hope that the students understand that even for Americans, like, she's very overwhelming. Yeah, but most people don't get it, and they're like, "Are all Americans like this? Are they like, like no?" So basically, she just need a break with you being a friend. She's just scared. I'm sure her heart is going like 100 miles an hour right now, speaking with you. She's just She scared did of. so good though. She did They do, amazing. but they're just shy. Okay. Well, you know that like in the past, like I've utilized Give them an hour a from week or friends of something. yours. Give them an hour a week or something, just to my teachers. So Imran is at the school. Sadia is kind of working with us, and then there are four other teachers, facilitators at our school. Just give them an hour, half an hour, whatever you can, because you're nicer. You have so much more patience than Carla and other people that I know. Because you're a nurse. So if you just talk to them and just give them some time, that's all I need. I don't need their customers. You just need to be able to do the book reading like you did and just make them comfortable. And they all know English. It's not like they're uneducated people. It's just they're not confident enough to speak in it. It's a new language for them. Like when I don't have my daughter, it's easier for me to commit. Um, I can't do evenings Pakistan time because I'm running out for the office. But potentially, like if they're willing to get up in the morning, probably earlier than they like, but I could probably do like a 6 or 7 o'clock in the morning. But after that, I'm going to sleep because I'm exhausted because I've been working. I get up at like 4, 5 o'clock in the morning. So if they're willing to, like, if they're committed and they want to like get up at like 6 or 7 o'clock in the morning, I'd be willing to give them a half hour to an hour. That's a great offer, Imran. Imran and Sadia, take it. So Sadia, all she's saying is that if you can schedule at 7 o'clock in the morning, if you can get up after Namaz, after Fajr, and do a call with her, she will give you half an hour just to talk with her, and she'll coach you.
Okay, so Okay, she done. has. We got her now. You know, keep talking as long as we can keep her. I have free time. Well, I have free time for like the next 30 minutes. Then I have to change. I've got a vaccine clinic I've got to go to. We'll take what you got. We'll take 20 minutes. No problem. Yeah. Go for it. On So Sadia, Saturdays, I might have time. Sundays, I'm a little busy. So like maybe later in the evening on a Saturday, I could do. Like, let's see, if I wake up at let's 7, 8. let's do now for now. Okay, Okay. let's live in the moment. So All let's right. talk now. Sadia, you go ahead and talk to Mara. So Mara is Chinese American. She doesn't look Chinese, and she is a Muslim. She converted or reverted, and she was married to a Pakistani man. So she also understands a little bit of Urdu. At least hello, hi, how are you? I guess aap kaisi hai, maybe. And yeah, I just talked to her. She's a very wonderful person. We're friends for like, I guess, over 7 years. She got really upset with me once because I liked the page of Donald Trump because I wanted to know what's happening. So not she unfriended me and everything. I'm not going to talk to anybody who likes Donald Trump. So yeah, just talk to her. You tell them how mean I was to you, and then you tell them to talk to me. They're going to be terrified. They don't get it. It's like they can't relate to it. You know. Okay. Yeah. So, who wants to talk? Nobody wants to talk. You talk to Sadia. Okay, Sadia. So, what is your plans for this week with your students? With my students, inshallah, I have to go to social media incubator, and there are some students, some gatherings, some females are coming there. I will meet them. Okay. Now, do your students, do they also speak English, or are they developing that skill right now? No, no, they are not speaking English. Okay. Um, and what percentage of your students are females versus males? Sorry, What percentage of your students are females and what percentage is males? Like, is it 70% females, 30% males, or 90% females and 10% males. okay. And what are some of the strengths of the students? Mother's tongue Urdu. So speaking in Urdu is their strength, They and are what they are kind of speaking Urdu. what kind of weaknesses do they have? English? like like I mean, are they good at like um uh are they good at like graphic design? When they're doing freelancing, what kind of work are they doing? Yes, sorry. When the students are like doing freelancing, what kind of skills are they doing? They are doing graphic designer. They are doing nowadays. Yeah. Uh, they are basic for graphic design. I'm teaching to basic to advanced graphic designing. Okay. And which mediums do you use? Mm, which Mediums like, medium? are you using like Canva? Are you using Adobe? Like, what are you using to like? I'm using Canva. Okay. All right. Um, and like, I personally don't know Canva. Most of my presentations are like I don't know, like they're the in How about Microsoft Word this? presentations. How about you pay her $5 and you become a student of her? When I will have time to learn Canva. You said you have time 7 o'clock in the morning, so if you can do a 7 o'clock in the morning class for you. Paying $5 is never a problem. I can totally. I I just know, give that's her why I'm $5. saying. Yeah, but you have to take the class. Okay. Okay. How long does the class take?
to learn Canva? Yes, sorry. How long does the class take to learn Canva? 45 minutes. You can learn Canva in 45 minutes? Yes. Like start to finish? Yes. Okay. All right. So I will pay you $5 to teach me Canva in 45 minutes. Not right now because I have to get ready in about 20 minutes. Okay. But inshallah, one evening, my time, morning, your time, we will set up a time and I'll pay you $5 to do Canva, teach me Canva. Okay. What do I need? What are some of the things that I need? Do I need a computer? Do I need my phone? What Joining your phone. Joining your phone. You can easily join Okay. my Zoom classes. Okay. And like for like if you're teaching me Canva, do I need to have a computer? No, not need of computer. I have one, but like I don't know like If you have, Okay. you can. If you have, you can use. Okay. Do I need to download any application? Yes, Canva. Okay. So do you have instructions that tell me like for the class what I need to have to be prepared to do the class? No. When I'm giving lecture, you can listen carefully my lectures, and I'll give recorded lecture also. Then you can, if you can't understand, people and my students are easily understand. But Okay. if you can't understand, you can repeat. You can see again, and you can uh, make design, Okay. make All right. assignment. Sure. So I'll actually part of the class is that you expect for me to do an assignment and then turn that in. Okay. Yes. All right. So when do you want to do this? Saturday and Sunday holiday. I'm not giving class, Uh-huh. and Monday to Friday. Monday through Friday. Monday to Friday, I'm giving class. And you're able to do 7 a.m., correct? Yes. I can't do any later than that because I go to sleep Monday through Friday, like Sunday through Thursday. So, but my Sunday is your Monday. Yeah. Yeah. So, okay. Let's see. This week is not good, but maybe the following week I could do. Where is my? Give me Okay. while I find my planner. Hold on. Because we're gonna schedule it. But I need my planner. Oh gosh, I just made a mess. Sorry. Here it is. That's not it either. There it is. There it is. There it is. My planner. Okay. Sorry about this. But if I don't plan it, it's not going to happen. If I don't actually schedule it, I'll say I'm going to do it and then I don't. Okay, so we are in June. Today is the 10th. Can you guys see me if I do this? Can you see me? I'm trying to open my calendar real quick. Can you hear me? Yes? No? We can hear you. Okay. What about Tuesday, which would be your Wednesday morning? Your Wednesday, the 21st at 7 a.m. Does that work for you? Yes. Okay, so 9 p.m. Canva class with Sadia. Sadia.
Okay, so my 9 p.m. is your 7 a.m. So your day is Wednesday the 21st at 7 a.m. Okay. Okay. All right, great. I'm excited. I am so excited. And how do I send you payment? We will teach her how to make a Payoneer account, and then you can just Zelle it or just PayPal it or your bank account. Yes, I have bank account, Easy Paisa, and JazzCash. Yeah, it doesn't work in the United States. You have to open a Payoneer account, Satya, and I then once you open, I can have money just transferred to I her. know, but I want her to have a Payoneer so she can experience it. Okay. Okay. They don't do it because they don't see a need, and once their $5 is stuck somewhere, they're like, I need to get my $5 out. So then they will make a Payoneer account. Okay. It's a free service. They just don't do it. Okay. And Thank hopefully you. next time I come to Pakistan, I plan to open up my own bank account there. So now I finally can. So You can without coming here. You can go to Roshan Digital account and you can go to open one. where? You can just Google Roshan Digital. Russian Digital. I'll text it to you. Okay. And you have your Pakistani ID card, right? Mm-hmm. So you can open Naya Pay account right away. Naya Pay, it's a digital bank, and in a minute you will have your new account number. You just give them your ID card. That's it. You can sit Okay. over there and open it Awesome. if you Good want. to know. Now you know. So See, Naya this is the Pay, stuff that Americans need. Is that information. Like that is helpful information for me if I want to have a bank account in Pakistan. This is yeah, but you great. can't have it if you're not married to a Pakistani. Yeah, I know, but like there's other information that you might be able to share that like when I needed a graphic designer, I found You a can you graphic can designer through interview you. you can interview me as often as you want. I have no problem with that. And then I would be very happy to help you make $1 billion in the next 5 years. It's not a problem. It's really easy. It's just that you just have to focus and have time. If you take out an hour a day, or that's more than enough. It's really, I think there is so much money to be made in these differences. It's like these things which you just found out. It was so simple, but like if you ask somebody, what is Cash App, or what's the PayPal thingy, the payment service? It's something in the US. I PayPal. can't remember. We have There's PayPal. another one, huh? There's Zelle, PayPal. There's Say Zelle, for example. So Carla was arguing with Shahrukh. I want to Zelle you. I want to Zelle you. He's like, is she cussing on me or something? And because he doesn't know what is Zelle, so it's just a different terminology. there's Because Apple Pay. I know, but people know what they know, right? So that's why they need to make these friends so they can start knowing the cultural information which they can't just open a book and read. This is the information which they only find through friendship, relationships. That's what they don't get. This is what nobody gets. I don't, for some reason, that the reason the world is so different is that information in the air, or the cultural information of the planet, doesn't go across the cultures. We live in our box. I'm a Pakistani, I'm an American, I'm this, I'm that, and that information doesn't cross the boundary because we have created a boundary. Shadi is like, oh, I have Jazz Cash and I have Easy Pay. It doesn't matter if she has Jazz Cash or Easy Pay, because What kind of fees though will there be? Like if she gets like a Payoneer account and then I Zelle her money or I Cash App her money? Zero? yep, Okay. there's no Well, that's fee. It's just like people just don't know it. People are like crying, oh, I need PayPal. You don't need PayPal, dude. It's used to be that you needed PayPal. Why now you don't need it anymore? at what rate do they convert it at? I don't know. Maybe they lose 5%, but if you're transferring $1 million, I would suggest use Bitcoin. Okay.
Well, I mean, I normally use Remitly when I'm sending money to Pakistan. So, but like I send bigger amounts, so it makes. If you're using Remitly and you're using bigger amounts, just use Binance. And just if you use Binance or crypto, then you will lose maybe 0.5%. It's more cumbersome to set it up once, but once you set it up, then it's fine. There's no cost to it. And then it's instant transfer, not like it takes like Remitly takes maybe an hour. Wire transfer takes me 3 days to send from the US to If I Pakistan. do express through Remitly, it takes 10 minutes. If I do like through my bank account and stuff instead of through a credit card, then there's a bigger, like the amount that is sent is bigger, but that does take like 5 days. Yeah, I know. That's why I'm saying use crypto. And then in crypto, you get the market rate. You don't get the local rate, which is higher than the bank rate. Banks are just waiting to be obsoleted. It is just going to go away eventually. But till that time, we just have to use them. So Sadia, you're supposed to talk with her, not me. Come on. Imran, why don't you talk to her for a minute? I know you're not scared when I'm sitting there, but you're scared when I'm not there. I don't understand why. Now his phone froze. Even the phone got scared. My God. Are both Shahrukh and Imran frozen? Shahrukh speaks fine. Shahrukh has no problem in speaking. Shahrukh is a Geico. What's a gecko? Oh, a gecko. A gecko, yeah. I'm like, what's a Geico? An insurance company? Yeah, I thought it was named after the gecko, isn't it? So Geico is the company, Gecko is their mascot. Oh, I have seen so many Geico ads that I think that is a Geico. Has become synonymous with a gecko. Yeah, you understood it. So, Sadia, ask her more questions. Do you have any questions for me, Sadia? No. No? Make one No. up. Make up a question. Okay. Why you don't speak Urdu? Why don't I speak Urdu? Because You it's can. not time efficient. Like, do I have people that can teach me Urdu? I sure do. But their motivation is to improve their English. So their English is 100 times better than my Urdu. I mean, I know a little bit Tori, but like You can some words, please speak. I can't like string together sentences. That's the problem. If I hear something, I know certain words, and so that I can kind of figure out what people are talking about, but I don't know how to like have like a full sentence. Like I know ab kaise ho, I know Allah Hafiz, I know Let me ask Sadia a question. Sadia, do you speak Sindhi? No. Why don't you learn Sindhi? You live in Sindhi. I can understand in Hindi, but I can't speak. Sometimes I Why can don't you speak. learn it? do you speak Pashto? Yeah, do you speak Pashto? Why don't you Why learn not? it? Why not? Because I'm not interested in Yeah, there you Pashto. go. So why should she be interested in learning Urdu? What would she get out of it? My husband's native language isn't Urdu. Like I mean, it's his country's language, but like in home they speak Pashto. So like he speaks Urdu, and he'd probably rather me actually learn Urdu if I'm gonna learn a language. If he wants me to learn a language, he'd probably say Arabic. But there's too much languages to learn and not enough time to accomplish them all. So I know little bits and pieces. And when I have done teaching of English online, I have students from all over the world. So I have students from Indonesia, Morocco, Libya,
Algeria, Brazil, Vietnam, Thailand, China, Japan, Pakistan, you know, so it's always just been easier for me to use English. That's why. Qasim Bhai says that Urdu is one of the most wonderful language in the world. I think every language is a wonderful language. It's just how you see it. It doesn't mean that your language is bad. French is more considered to be more passionate language. So then you should learn French before Urdu. I think language Je should. parle français un peu. I speak a little French. Mhm. Not well. Yeah. So next question, Sadia. Okay. What do you find fulfilling, enjoyable, and pleasant, and uh, in your life and important? I think that it's important to be kind. And I find it fulfilling to help people. If you look on my Facebook, like my mission in life is to remove obstacles and barriers that marginalize populations from accessibility to healthcare and education. So most of the things that I will invest my time in is working towards those goals. So as a nurse, I'm doing, you know, reducing patients that are being marginalized, and the company I work for really works to try to alleviate barriers. So most pharmacies don't go and give injections in people's homes. They hired me to go and be able to do that. So I'm living my dream in my position. But that's also why, like, I started teaching online English 8 years ago. I don't do it full time now, and I've always done it for free as like kind of human service, because I know that there's a lot of people that don't have accessibility. So like that's probably why I like to help Rayhan on things like this, and that's why I don't know if you guys know, but like when Carla first started the English show, on her second day, I joined her and I worked with her for like 3-4 months on the English show. And that's how I know Carla so well. We go way, way back. So I think helping people is something that I find fulfilling. I think that doing charity, like doing volunteering of some kind, is like one of the best antidepressants that you can find. There's not anything that really makes you feel much better than when you're helping other people. Why do you like helping other peoples? You feel happiness, yeah, or this is your goal? Both, you know, like I made my life mission around something that I felt was worthy. But helping others also makes me feel good. And it's something that I started when I was very young. Like when I was 12 years old, I volunteered in a hospital, and I would go from patient room to room, and I would help them to check out library books, and I would read them books and also just talk to them. You know, because sometimes in the hospital they're very lonely if they don't have family coming to visit them. So I started doing that early, and I liked the way that it made me feel. And when I serve others, it feels good. You know, that's why I said it's the best antidepressant that you can have, is to help others in some way, especially those in need. Okay. Uh, do you like making connections? Yeah, I've Different. made lots of connections. Um, I have some of the connections that I've had. I've started a business with someone I made a connection with, started a school with someone I had a connection with, made lots of friends, taught English with Carla for several months, um, became very good friends with many Pakistanis. You know, um, I have seen people from when they first started speaking English growing into now, some of them are working in English learning centers, you know, in Pakistan, which has been very rewarding. Um,
And so, yeah, I think it's important to make connections. In my personal life, my connections are one of the reasons that I get paid more for what I do. I'm paid very, very well at the very top of my pay scale for my position. And that's because I know people in a lot of places. So I have connections with DHS. I have connections with the ADRC. I have connections with grant writers. I have connections with people that do graphic design. And because of that, I am paid better in the United States than the majority of people with the same education and training. Very nice. Okay, what makes you and what makes you stressed and anxious and waste your time What makes me and feel drains you? stressed? I don't know, lots of things. Teenagers, they do that. I think that, like, when I have any expectations in other people and they don't live up to that, that's very draining for me. Like, if I expect someone to do something and then they don't follow through, that depletes me. Like, that makes me feel overwhelmed and frustrated because I can control myself, but I don't have control over others. And I'm a little OCD, so I like to keep everything in control. Other things that make me feel stress. I think when I don't have control over my situation. If I don't have control over something, it's very hard for me. What about you? What makes you feel stressed and anxious? Uh, I'm not feeling stress Ever? ever. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, if you were financially secure and you did not need any salary, please send me. Would you like to? Would you spend your time? Doing exactly what I already do because I love what I do. Okay, Yeah. okay, So what okay. I do is exactly what I would probably be doing. Maybe having additional avenues in which to do it. But like the company that I'm working for um, really does a great job. I just might expand the scope of what I'm doing if I had the financial resources to do so. But I would do exactly what I'm doing currently. Okay. And please tell me what's some childhood interest. My childhood interests. Um, I liked swimming as a child. I liked skiing, like snow skiing. I liked traveling. Um, but as an adult, I would say that my interest changed. I still like traveling. Um, and I also love reading. I read a lot of books. I read between 50 to 80 books a year. Okay, okay. Let's tell me about what learn about your traveling journey. What have I learned from traveling? I don't know if I learned it from traveling, but I've learned it from interacting with people from around the world is that at the foundation of every person, we are all the same. You know, we all have hopes, desires, frustration, challenges, anger, um, and like we're more same than we are different. We may not agree on specific things. We may have a different take on politics because we look at it from what serves our
what benefits us most. But for the most part, we want our families to feel safe. We want to feel secure. We want to have food. And we want to be able to enjoy our life. So most people, from what I've seen, are same. And the ways that they go about it are slightly different. So, like in United States, I would say like we're very independent and we do things individually rather than as like a family or a collective. Um, in Pakistan, I've seen like everyone is more family focused and it's more like you guys have parties and stuff, but it's like all family and stuff. And I think that both are great. They're just different. Like when I've gone to other traveling places, like I've been to Canada, um, that was like I would say very similar to America. I learned that I really like being able to visit countries that have azan because it's like it's not just like one azan that you have. Like this one goes off, then this one, then that one, then this one, and that one, and you have them coming in different parts of it from all around you. It's surrounding you, and it's a really beautiful experience. So yeah, and the foods in different countries, that's a big part of travel that I really enjoy. I'm not sure I understand. Oh, sorry, shush. Who is your inspiration, Mara? Who is my inspiration? Um, I would say that I have lots of people that I'm inspired by. I, I was sharing, I shared a post about a former principal of the school that is in the building where I work. And like, I'm very inspired by him. Like he is a principal and he's very Islamic, and his son was murdered, and he forgave his son's murderer, gave him a hug, like very sincere, and cared about him like a son. He even pleaded to the judge not to give him the death sentence. So I'm very inspired by him, and I hope that one day I can have a heart as pure and good as his. I'm also inspired by the owner of my company. When he permits me to participate in having such a significant role um, in helping the lives of disadvantaged people. And that is super amazing. And he also allows for me to potentially even take that further. So I would say my boss and another gentleman. I'll share something on my page shortly that will talk about the man that I was discussing. I don't want to pronounce his name wrong. Okay. What area of your life, your current life, you working well for you? What's working well in my life? Like professionally, I'm doing really good. Um, I have, I'm at the top of my field for my role. I am entrusted to work on big projects. I just submitted for the accreditation for a DSME program, diabetic self-management education, that I've been working on for the last 4-5 months. And I just submitted it this last week, which was humongous professional goal that I had set for myself, and I achieved it. So I would say that's the thing that's going best in my life. But I'm going to actually have to get going because I have to get ready because I have a vaccine clinic I have to go to. So it was really great to talk to you, Sadia. You did fantastic. Don't doubt your English. You're amazing. Thank you, Mara.
Thank you so much, Mara, for popping in. Have a blessed right. day. All right, take care. Okay. Thanks for having me. Right. चलें, शुक्रिया। सादिया, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है इनके साथ? जी सर। चलें, गुड। तो अब आप इनका इंटरव्यू भी कर लीजिएगा, और जब आप इंटरव्यू कर लें तो उसको आपने यूट्यूब पे भी डालना है, और यूट्यूब पे डाल के आप यूट्यूब पे क्लोज कैप्शनिंग आती है, तो यूट्यूब को जो समझ आ रहा होता है वो लिख के दिखाता है। तो जब यूट्यूब पे जो लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देखेंगी कि मैंने तो आप, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है, बोलने में और सुनने में कमज़ोर है। तो आप जब अपने आप को सुनेंगी, तो वो आपको बताएगा कि आपने क्या-क्या गलतियाँ करी हैं। ठीक है। तो उससे आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ख़्याल कर लें होगा। दूसरा ये कि कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होंगे जो वो बोलेगी और आपको समझ में नहीं आएँगे, तो आप उसको कॉपी करें, चैटजीपीटी में डालें और उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, और वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी डाल सकती हैं। और मिसाल के तौर पे एक जुमला समझ में नहीं आया, तो आप जुमला डाल सकती हैं कि ये मिसाल के तौर पे कुछ ज़रबुल मिसल इंसान इस्तेमाल कर जाता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट आप चैटजीपीटी को बोल सकते हैं, जो पूरा जुमला देख के, कि इस जुमले में ये स्पीकर मुझसे क्या कहना चाह रहा है। जैसे शेर अशार की तशरीह होती है ना, इसी तरह से आप जुमलों की तशरीह चैटजीपीटी की मदद से कर सकेंगे। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन आसान हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने गाइको का इस्तेमाल करा था, अब आपको नहीं मालूम गाइको क्या है, तो आप चैटजीपीटी से पूछेंगी कि गाइको का यहाँ पे क्यों ज़िक्र किया जा रहा है बार-बार, या गेको क्यों बोला जा रहा है। तो गाइको एक इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका की, तो वो अब इंश्योरेंस का क्यों बोला जा रहा है? तो अब वो गाइको एक ऐसी कंपनी है जो कि हर जहाँ भी आप रेडियो सुने, टीवी सुने, आपको इश्तिहार उसका ज़रूर नज़र आएगा, इतना इश्तिहार करते हैं। तो गेटिंग इंश्योरेंस is really quick with Geico. 5 minutes can save you 5% or more. तो it's like उनकी saying है, रटी हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा इश्तिहार आता है कि वो रट जाता है ना। जैसे टीवी पाकिस्तान में कुछ इश्तिहार होते हैं, आप बार-बार देखते हैं तो आपको इश्तिहार ही याद हो जाता है। तो इसी तरह गाइको, अब लेकिन वो पाकिस्तान में क्योंकि इश्तिहार नहीं आता, तो आपको नहीं मालूम, तो वो उसका वो इश्तिहार का पूरे, जैसे डेंटोनिक है, जो भी कभी कोई मुस्कुराता है तो बोलते हैं ना डेंटोनिक की स्माइल है। अब आप किसी अंग्रेज़ को बोलेंगे डेंटोनिक की स्माइल है, उसको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका में डेंटोनिक नहीं मिलता है। तो ये वो कॉन्टेक्सचुअल और कल्चरल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि आपको कल्चर से ही सीखने को मिलती है, आप ऐसे नहीं सीख पाते। और अगर कोई सिखाना भी चाहे, तो वो नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो बहुत गहरी और बहुत न्यूआंसेस उसके बहुत छोटे-छोटे होते हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा। वरना अगर अगर हम कोई यूँ मुस्कुराहट देखें तो बोलेंगे डेंटोनिक, लेकिन अगेन कोई नहीं समझा सकेगा इसको कि ये क्यों बोला जा रहा है। पाकिस्तान ही में किसी को कोई रहता होगा तो उसको समझ आएगा, या कोई गाना है या कोई शेर है, तो वो हमारे ही कल्चर के अंदर बसा हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई किताब नहीं है। तो हो अभी कासिम भाई कह रहे हैं आप इस पे कोई किताब लिख दें, तो हो सकता है कि आप लिख दें कोई किताब ऐसी कि पाकिस्तान की, लेकिन वो आप कार्ला के साथ जब इंटरैक्शन करेंगी या गोरों के साथ इंटरैक्शन करेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों, कैसे, क्या कहा जा रहा है। ऐसे समझ में आएगा नहीं, ना आपको कुछ ज़रूरत महसूस होगी कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट चैट जीपीटी के होते हुए आप पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। चलें, अच्छा शुक्रिया सर, बहुत-बहुत। जी। सर स्टार्ट में आपने कहा कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, यानी मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और मैं काम करती चली गई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आप मुझे इतनी देते चले गए, कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस देते चले गए। ये आपका ट्रस्ट था और मैं तो कुछ नहीं थी, ये आपका ट्रस्ट था जिसने मुझे इस तरह बना दिया, आज कॉन्फिडेंस वाली बना दिया और आज अब मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ मैं। ये ट्रस्ट जो है मेरे पेरेंट्स करते थे मेरे ऊपर और इसके अलावा मेरे बहन-भाई भी इतना नहीं करते थे क्योंकि बड़े होते हैं ना वो लोग, बड़े होते हैं ना वो समझते हैं, लेकिन माँ-बाप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुख़लिस से उनका ख़ुलूस ऐसा होता है कि उन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमेशा ये देखा था कि
ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा अम्मी-अब्बा ही प्यार करते थे। मैंने कोई देखा ही नहीं था। टीचर्स थे, लेकिन वो ज़िंदगी से जाते रहे टीचर्स। प्रोसेस चलते रहे ना, स्कूल खत्म हो गया तो यूनिवर्सिटी कॉलेज आ गया, कॉलेज खत्म हो गया तो और टीचर्स जाते रहे ज़िंदगी में। लेकिन आप जब आए ना, तो ज़िंदगी में बहुत चेंज आया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पर बहुत ट्रस्ट किया, अब तक ट्रस्ट करते हैं और पता नहीं कैसे आपने मेरे अंदर की सलाहियतों को समझ लिया जो मैं भी नहीं जानती थी। चलें, कोई बात नहीं, मेरा जॉब है यही, मेरा जॉब यही है कि जो एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं जैसे अल्लाह ताला हम की तरफ हम जाते हैं तो वो भी हमारी तरफ आते हैं, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं तो कोई हर अच्छे टीचर को अच्छे स्टूडेंट की तलाश होती है। तो जैसे इमरान है, अब वो शौक से सुनता है तो मुझे मज़ा आता है सिखाने में, क्योंकि एक आदमी सीख रहा है तो उसको सिखाने में भी मज़ा आता है। जो आदमी सीख ही नहीं रहा, मुँह बना रहा है, उसको सिखाने में मज़ा नहीं आता। तो आपका भी शुक्रिया इमरान, आपका भी शुक्रिया बेटा। थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक, और आप काइंडली मारा के साथ बुक कर लें। अगर आप अभी और बैठ सकते हैं तो मैं कार्ला आना चाह रही है स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ एक और सेशन कर लेते हैं। इसको मैं एंड करता हूँ। अगर आप दोनों में से कोई भी है अवेलेबल तो मैं उसको भी ऑन बोर्ड कर लेता हूँ, जाके आप उससे सवाल जवाब कर सकते। सर शुक्रिया मुझे तो अभी एवरीवन। आटा और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने इतना टाइम दिया मुझे आटा गूँथना है और रोटी बनानी है। तो मैं 8 बजे खाना खा लेती हूँ। तो मैं डिनर लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए टाइम तो निकाल सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है और आपकी बड़ी ही मैं कदर करती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन से अल्फ़ाज़ कहूँ आपको कि आप कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में। और यकीन कीजिए कि मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी के जो तकलीफ़ तरीन दिन थे और जो मैंने सब्र ज़िंदगी में किया, उसका अजर आपकी सूरत में अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। चलिए, इसका शुक्रिया अदा करने का तरीका ये है कि जो कुछ सीखें वो आगे बाँट दें। यही, इससे ज़्यादा कुछ शुक्र कर नहीं सकते हैं। ठीक है? चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।